Hello students, today we discuss some basic concept of chemistry. Topic law of constant or fixed or definite proportion यानी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उनमें से ये सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound obtained from any source or prepared by any method have the same chemical composition of its constitute of by weight। किसी भी कंपाउंड की आप बात कर लो, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर लो, उस वेट के अकॉर्डिंग उसमें जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। H2O वाटर, तो H2O वाटर में भी अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:16 और 1:8 का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर को हम किसी भी प्रोसेस से बनाएं, किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:8 का रेशियो पाया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कार्बन 12 ऑक्सीजन 16:32, तो 16:12:32 और 4 कॉमन ले लें तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 1 3:8 का रेशियो होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच 3:8 का रेशियो होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, उसमें जो वेट के अकॉर्डिंग उसका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 3:8 का रेशियो होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट आपका यही कहता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो we discuss law of constant or fixed or definite proportion। According to this law, a chemical compound obtained from any source or prepared by any method had the same chemical composition of its
constitute by weight. Example, we can say that H2O have two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. So we can say that ratio of hydrogen and oxygen is 1:2. 1 multiply 2 is to 16 equal to 1:8. H2O को हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर करें, किसी भी मेथड से उसका प्रिपरेशन करें, उसके H2O के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 का आएगा। यदि 9 ग्राम H2O है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 have 1 atom carbon and 2 atom oxygen. So we can say that ratio of carbon and oxygen is C2O. Atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16 and CO2 have 2 atom oxygen. 16 multiply 2 equal to 12 into 32. 4 is common, so we can say that ratio of carbon and oxygen is 4 3 is 12 and 4 8 is 32. कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, बनाया जाए, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा 3:8 का आएगा। इसका मीन्स है कि यदि हम 11 ग्राम CO2 का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 3 ग्राम कार्बन होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यदि हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इस प्रकार से इनका जो रेशियो है एलिमेंट का वो फिक्स रहेगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन। और सिंपल प्रोपोर्शन, law of multiple or simple proportion. According to this law, when two elements combine together to form two or more than two chemical compound, then the weight of one of the element which combined with a fixed weight of the other bears a simple ratio to one another. मीन से ये होता है कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होने के बाद वो दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उस कंडीशन में किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ यदि हम
अगर एलिमेंट का रेशियो देखेंगे वेट के अकॉर्डिंग तो वो एक सिंपल नंबर आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल और सिंपल प्रोपोर्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस law, according to this law, when two elements combine, when two elements when two elements combine together to form together to form two or more than two or more than two chemical compound, two chemical compound, more than two chemical compounds, then the weight of one element one of the elements which combine with a which combine with a fixed weight of the others bears a simple ratio of one another. According to this law, when two elements, suppose two elements are C and O, two elements combine together to form two or more than two chemical compound. कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO एंड CO2। इनके अगर मास देखेंगे, कार्बन का मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास
16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32। तो यहाँ एक एलिमेंट जो कार्बन है उसका फिक्स मास 12 ग्राम है, लेकिन अगर हम अगर ऑक्सीजन की अदर एटम्स की बात करें तो ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है 16:32 आएगा। इसका मतलब है 16:32। If we simplify this, then 1:2 1:2 means this is simple ratio. So we can say that when two elements combine together to form two or more than two chemical compounds, then the weight of one of the element will combine with a fixed weight of the other via a simple ratio to one another. Next example. Oxides. Nitrogen oxide and ratio by weight of nitrogen and oxygen. Nitrous oxide of nitrogen is nitrous oxide. N2O. These oxides are known as laughing gas. Nitrogen 2 atom. One nitrogen atom have 14 atomic mass and oxygen have 16 atomic mass. 14 to the 28 is to 16. Next oxide is nitric oxide. Chemical formula of nitric oxide is NO. 14 is to 16. Next oxide is dinitrogen trioxide. Dinitrogen trioxide. N2O3. 14 to the 28 is to 16 to the 32, 16 to the 48. Next oxide of nitrogen is dinitrogen tetraoxide. Dinitrogen tetraoxide. N2O4. 14 to the 28, 14 for the 64. Next oxide of nitrogen is dinitrogen pentaoxide. Dinitrogen pentaoxide. Chemical formula of dinitrogen pentaoxide is N2O5.
ratio of nitrogen and oxygen is 40 to the 28 and oxygen 16 5 the 80. Simplify this ratio. 14 is to 8. 14 is to 16. 14 is to 24. 14 is to 32. 14 is to 40. Ratio of oxygen is in oxide of nitrogen 8, 16, 24, 32, 40. 8 is to 16 is to 24 is to 32 is to 40. Simplify this ratio. 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. These ratios are simple ratio, so we can say that this example show law of multiple or simple ratio.